Namaste student. Today we are going to start the new chapter, that is pollution of water. Now in this class we are going to discuss what are the causes of water pollution and what are the parameters or what are the characteristics of a polluted water. So before starting this class, that is related to water pollution, let us know why we are going to read this pollution of water. Okay, तो अगर हम pollution of water पढ़ेंगे तो reason क्या है, why water pollution? The reason behind it is that जितने भी आपके water जो है that is suitable for drinking purpose, that is very less amount. आपके धरती के 70% वाटर है, बट ऑल आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ओनली लिमिटेड अमाउंट से 2% वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ओके, एंड 98% जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, सलाइन वाटर, जो कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस है. इन दैट ऑल्सो 97% जो वाटर है वो आपके पोलर आइस कैप में है, और जो 3% वाटर है वो आपको ओशन, रिवर और पॉन्ड्स में है. Okay, so what happened with the increasing population, we are going to pollute the water, and a time will come when we will be not having water suitable for drinking purpose. So that's why this topic is very important. Okay, now let us come on to the topic, that is water pollution. So let us define first what is a water pollution. The change in normal properties of water by presence of large number of foreign substances like clay particles, chemical substances, microorganisms in water bodies such as lakes, rivers, oceans is known as your water pollution. Okay, so what happened? The contamination or the addition of these substance in water, that is known as your water pollution. Here you can see the two source of water pollution. This is your natural source, where due to the presence of algae the water is not suitable for drinking purpose, and that's why it gains the color green color. And here due to addition of many waste garbage in the water is unsuitable for drinking purpose. Okay, now let us come on to the second topic, that is water pollutants. The contaminants or the foreign substance that pollutes water and make it unfit for use are called water pollutants. Examples of water pollutants are your chemicals, pathogens, or you can say microorganisms which are harmful. Then next is algal bloom, next is sewage, heavy metals, suspended matter, etc. Okay, so algal bloom, you can see in the previous diagram I have shown you the green color covering of the water surface, that is known as your algal bloom. Okay, now next is your sewage, means the waste water coming from the factories or your municipal corporations. Now heavy metals, now suspended matter means the visible impurities present in the water. Okay, so these are all about your water. Now let us see what are the characteristics of a polluted water. Okay, एक polluted water अगर आपको दिया जाए तो उसकी क्या क्या characteristic और क्या क्या उसके properties होंगे. पहला हो गया the bad taste of drinking water. अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उस पॉल्यूटेड वाटर को, तो आपको एक बैड टेस्ट आएगा. ओके, जनरली वाटर की कोई टेस्ट नहीं होती है, लेकिन अगर पॉल्यूटेड वाटर होगा तो आइदर वो ये सावर होगा या स्वीट होगा या फिर bitter हो सकता है. ओके, नाउ द सेकंड इज ऑफेंसिव स्मेल और से स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स. अगर आप किसी वाटर बॉडीज के करीब से जाते हो तो एक बहुत ही गंदा स्मेल उधर से आएगा. ये भी इंडिकेट करता है कि जो वाटर बॉडी है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है. ठीक है, द सेकेंड थर्ड वन इज योर कलर ऑफ वाटर इन वाटर सोर्स. जो कलर जो होगा, जनरली वाटर जो प्योर होता है दैट इज कलरलेस, बट इफ the water is having certain color, it indicates that the water is your polluted in nature. Now the fourth one is your unchecked growth of aquatic weeds such as water hyacinth in the water bodies. You might have seen that in water bodies they are covered with a special kind of grass, very green color grass, and that grass is known as your water hyacinth. It is aquatic grass, and these indicates the water is very polluted because they are generally grown in polluted water. Now the next one is decrease in number of fish in lakes, rivers, sea water, etc. Okay, so what happened, you will find that if there is a decrease in amount of fish in the lake, rivers and sea water, it indicates that the water is getting polluted. Okay, so it is also the indication of a water pollution. The next one is oil and grease floating on the water surface. Okay, these are the very visible. You will find that the oil and grease, they are generally floating on the surface of water.
Now let us discuss some of the causes which leads to pollution of water. The first cause is human activities like bathing, washing clothes and animals in water body. Generally क्या होता है कि रूरल एरियाज में क्या होता है कि बाथिंग या वॉशिंग क्लोथ्स या एनिमल्स के लिए वाटर बॉडीज में जैसे रिवर्स या पॉन्ड्स में जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडी जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है. सेकेंड, मैनी इंडस्ट्रीज सच एज लेदर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो होता है जैसे पेट्रोलियम से रिलेटेड, pharmaceutical industry means medicine industry pollutes water by releasing harmful toxic chemical waste in water bodies and causes many diseases. जैसे इंडस्ट्री लाइक पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जो क्या करते हैं, ये बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स आपको वाटर में रिलीज करते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीज. You can see in this diagram here a factory releasing many chemical inside directly inside the water body and thereby polluting the water body. And the third one is excess fertilizer and pesticide used by the farmers are gradually washed by rainfall in the groundwater or सरफेस वाटर नियर बाई एंड देयर बाई पॉल्यूट्स इट. ओके, तो होता क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सेस बच जाते हैं वो धीरे धीरे एट द टाइम ऑफ रेनफॉल वो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में चले जाते हैं या फिर नियर बाई वाटर बॉडी में चले जाते हैं और उसको वो पॉल्यूट करते हैं. ओके, सो इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज आप जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की यूज नहीं करेंगे. Now next is your release of sewage from big cities directly into the river or any other water bodies. This promotes the growth of algae and bacteria which causes the dissolved form of oxygen, which uses the dissolved oxygen, and aquatic animal will start dying due to lack of oxygen in water. So what happen if you are going to release this sewage into the water body? What happen? The water body slowly will change into a green color. Okay, so green color क्या होता है? Green color is due to presence of algae and bacteria. Okay, so bacteria क्या करता है? During respiration, it will absorb all the oxygen dissolve in water, and that's why द ऑक्सीजन की जो कमी हो जाएगी वाटर बॉडीज में, अल्टीमेटली उसमें जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने लगेंगे. ओके, एंड फॉर दैट आई हैव शोन यू द डायग्राम हियर. द म्युनिसिपल वेस्ट is directly released into the water body and thereby they are polluting it. The next one is oceans are polluted by oil on a daily basis from oil spills from oil tankers, underwater oil pipelines and large ships due to leakage or accident in harsh weather condition like storms. Okay, तो क्या होता है कि oceans most the major one of the major pollution caused by water is in oceans. ओशन को पोल्यूट करने में क्या होगा कि जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज ऑयल स्पिल, मींस ऑयल का आपको वाटर में रिलीज कर देना. ओके, फ्रॉम या तो आप ऑयल टैंकर से रिलीज कर सकता है या फिर पाइपलाइंस जो पानी के नीचे जाते हैं उनसे रिलीज हो सकता है या फिर बड़े शिप्स जो होते हैं या तो उनमें लीकेज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाएगा जब वो स्ट्रॉम में जाते हैं तो वो इसके वजह से आपको वाटर पोल्यूशन हो सकता है. फॉर दैट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ए टैंकर. दिस इज ए ऑयल टैंकर एंड देयर इज ए क्रैक हियर. सो व्हाट हैपेंड, द ऑयल विल स्टार्ट coming out through this in the form of seepage. Okay, so this leads to the water pollution and this is also known as marine pollution. Now next is your pollution of water caused due to air pollution. Air pollution से भी आपको pollution या water pollution हो सकता है. Let us see. The smoke released during burning of fuel combines with water vapor to form acids and come down in the form of acid rain. होता क्या है कि आपके स्मोक जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं वाटर वेपर से और वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. दिस रेन पॉल्यूट्स द वाटर एंड मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल डिफिकल्ट. ओके, तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं इसके रेनफॉल की वजह से उसके सर्वाइवल उनको नुकसान हो जाता है. नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज रिलीज ऑफ हॉट वाटर बाय द पावर प्लांट्स इंडस्ट्री ऑल्सो लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर. अगर हॉट वाटर जो प्लांट्स और इंडस्ट्री भी रिलीज करते हैं वो भी एक तरह का वाटर पॉल्यूशन है. होता क्या है कि व्हेन हॉट वाटर रिलीज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड व्हिच विल हार्म द फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ. ओके, अगर आपको हॉट वाटर आपको वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर द डिसॉल्व ऑक्सीजन विल इवापोरेट आउट एंड द फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल दे विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ oxygen. So for that I have taken this diagram here. You see this is the cooling tower of a thermal power station. So what happened, they are generally releasing hot water through this stream and this hot water when reaches the water body it will cause water
Now here are some questions related to the topics that we have just discussed now. Please go through these questions and write the answers of this question in your homework notebook. Thank you.